so people out there, this is Sachin Singh and you're watching me on Fine Pictures. So I have a very interesting personality on my show today. He doesn't need any introduction. If you know him, it's well and fine. If you don't know him, my dear, you will come to know today. शादी के लिए हर कोई कभी न कभी ज्ञान का शगुन देता है। अब ना तू जल्दी से शादी कर ले। अगले महीने की 15 तारीख ठीक है सगाई के लिए। और ग्रहों की दशा के हिसाब से तो अब तुम लड़कियों से घिरे रहोगे। वो एक मटके से शादी करा दे तो बस एक पत्नी की जरूरत होती है। बेटा जैसा कहा वैसे पूजा करना। Let's welcome Anuj Sachdeva on my show. Welcome to my show, sir. Thank you for giving us your time out of your busy schedule, since your movie is on release and you're giving us time. So thank you so much for that. So here goes the first question, and very serious question. So I've been following you on Facebook. I have seen your posts on JD Look and all. So after Rishi Kapoor, Anushka Sharma and Sonakshi Sinha, did you ever thought that big celebrities will be promoting a film? Basically, लोग promote करते हैं. Everybody tries to promote their film. But I think if it's attached, if it's linked with a social cause, it makes sense. It makes sense to me. तो मैंने ये शुरू किया था. इसका नाम है #FindingJD. JD is basically the character in the film Love Sharma. और this character is very full of heart. He's somebody who's away from the family, who's gone to Goa, living with friends, and being away from the family, he's rooted at the same time. He's a little westernized as well. Westernized, maybe we actually have touched this topic in the film Love Sharma, which has come on 26th of February. और मैं आपको बताना चाहूँगा ये social cause के बारे में. Finding JD ऐसा था कि I started with my domestic help at home. This guy who's basically taking care of me, being away from his family, from his village. So I basically belong to Delhi. So I moved to Mumbai 6-7 years back, and in a way, my mom used to take care of me in Delhi. This guy he's called Ram, he's been taking care of me for the last 4 years now. So why not to write about him? And I made him wear these specs, and I clicked a picture, took a selfie, and further I tried to post it online and write something about him. Similarly, I tried to write about one of the watchmen who who's got a respect towards me, and he's always taking care of the place. So, इसी तरह से I have tried to touch with all the common normal person who's around me, when you still don't care about, you take it for granted in a way. So that JD is in everyone. That JD who's full of hearts, who's away from the family, is particularly those few characteristics I was finding, and those few characteristics are there in most of the people every time. At the same time, there are a lot of people as celebrities who have come to support this online. So they had sent me pictures with wearing specs online, and I am sure it just started with a small thing, but it became a rage. A lot of people tried to do that. Sonakshi Sinha was there, she did it. Rishi Kapoor ji has done that, and a couple of other people who tried to do it. And so promoting the film at the same time, a platform where a common person can be wearing the same specs, been seen online, shared on social sites. Whereas another celebrity who he might not get to see or meet anytime in his lifetime, possibly. So he's also sharing the same picture with specs. So I think it was a good cause. Okay, Anuj, so I have one personal question to you. Yeah. So when did you got bit by this Bollywood bug? When did it all started? I think I wouldn't say that I'm a born actor. I usually believe in things and developing the taste of it. So I started from scratch. I basically started with a 2005 pageant, with Mr. Grasin pageant, got Mr. Photogenic Award, Mr. Talent Award, and further got into MTV Roadies season 3 in 2005. Further with time, I was a footwear designer before being a model. So I managed to do both the things together. Further with time, I tried to develop the taste of getting into acting, and I done a course with Lee Strasberg in New York. Did one show on TV which got very popular in 2009, Sabki Lati Bebo. And further, this journey went on, and I think when I look back, I have to see that the work I've done so far, when you look back a few years back and you see your own work, it should look foolish, I feel. Why foolish? Because that's when you think that you're growing in life. So as you told Anuj that you have done a lot of television. So what is the biggest difference that you find in television and silver screen? See, the difference between television, the big screen is always there, for sure. The big screen, and even
being a host or being an anchor on awards function or any of these plays, it's a different medium altogether. There are a lot of, it's a different audience as well. People who might like to watch आप सोच सकते हैं कि अगर टेलीविजन शो चल रहा है आप उसके अपने pros and cons हैं, benefits भी हैं और कुछ उसकी difficulties भी हैं. Benefits ये हैं कि जो मैंने देखा था वो ये है कि अगर मैंने एक एपिसोड में I have not worked really well and I see that episode and say कि I think I need to work in this expression or maybe the character. So I still have time कि I can do it in another episode. मैं दूसरे एपिसोड में कर सकता हूँ. So the major difference, there are a lot of pros and cons with the television and silver screen at the same time being an anchor or a host in the award function. I think हर एक का अपने अपनी they have their own audience. At the same time, it's a different medium altogether to reach to people. अगर एक थिएटर में आदमी कोई प्ले करता है तो वो he makes sure कि लास्ट बेंच पे मेरी आवाज पहुंचे. So there are a lot of things to follow. At the same time, टेलीविजन में कुछ जो मुझे बेनिफिट देखा, कुछ बेनिफिट्स भी हैं. वो ये बेनिफिट है कि आप एक एपिसोड में अगर काम करते हैं और आप अपना काम देखते हैं कि आप यहाँ पर एक्सप्रेशन या समथिंग यू टू वर्क ऑन इट, you can manage to get a chance to work in the expression in the next episode. You can still work on it. But in movies, once you shot with the whole story, very rarely somebody would do a reshoot. Reshoot बहुत कम होता है. But once it's done, then I think you don't need to. Then you have no chance to work on it again. Or at the same time, television has those ads coming in between. आपको या जब आप television में देखते हैं तो there are a lot of things, activities you do at the same time. But the way of working with the big screen is आप पैसे खर्च के अपना वक्त निकाल के 2-2.5 घंटे के अंदर आपको पूरी मूवी का कैरेक्टर जस्टिफाई करना पड़ता है. जब कोई इंसान उसके पैसे खर्च के स्पेशली थिएटर में जाके मूवी देखता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है. उसके अंदर आई थिंक द एक्टिंग द परफॉर्मेंस हैज टू बी लिटिल सटल टू बिकॉज यू आर देयर ऑन द बिग स्क्रीन व्हिच इज दैट वेरी एक्सपोजिंग राइट देयर. आपके फेस every small expression is visible there. तो आपको I think with a different medium you have to work accordingly. That's what I feel. Otherwise, हर एक के अपने कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो हैं. So, Anuj, we have been watching you since Roadies 3, since you came first time on television. How do you maintain your physique? I mean, have you maintained your physique? I mean, can you give us some tips on this thing? I think मैं स्कूल में ताइक्वांडो में था, मार्शल आर्ट्स में, और मैं ब्लैक बेल्ट हूँ. तो with 8 to 9 years, 9 to 10 years, I think स्कूल के बाद में मैंने मार्शल आर्ट्स किया है. स्टेट लेवल पे for 3 years I was gold medalist by IMC. और because of that, I think the body condition to be actively fit and fine. I like to do my martial arts in between and try and do my taekwondo. तो वो एक जरूर एक मीडियम था जिसके थ्रू मैं अपने आप फिट कर पा रहा था. और I think mostly the best way is 30% is supposed to be the gym, but 70% is your diet, what you eat. तो आप अपने क्या फूड इनटेक करते हैं उस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं. So, dude, I have one question, one serious question. I'm a bit jealous of you. You have this humongous female fan following. How do you manage this? I don't know. It's all. I think it's they like my work. They like my screen presence. It just works. तब so far शाहरुख खान को भी नहीं पता होगा कि वो क्या मैजिक करता है स्क्रीन पे, लेकिन but I'm sure he's happy about it. So, tell us something about your character in this film, Love Shagun. This guy is actually, his name is JD. इसका full form नाम ये है ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे. तो जो दुबे जी हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में JD नहीं बुलाया जाता है. Unlike JD, जैक डैनियल सुनाई देता है, लेकिन वो दारू नहीं पीता मूवी के अंदर. He's very sober. He's a vegetarian guy, simple boy. और he's one of those, I would say, in the short form digitalized Amol Palekar in today's world. So which was a very tough thing to be simple. Actually nowadays simple होना भी simple नहीं. तो ये एक thin line थी जहाँ पर वो ऐसा न लगे कि I've been forced to be a simple boy, but at the same time he's a hero out of it. That he has that, he's supposed to be shown as out of the lot, as a unique person. अब ये he's away from the family और astrology में believe करता है क्योंकि mother astrology में believe करती है. तो जैसे होता है जब मेरी मॉम भी, मैं मुंबई आया था तो उन्होंने मुझे अंगूठियाँ पहनाई थी कि अपना काम ठीक रहे, सेहत ठीक रहे. तो he's actually I could relate to JD like that. So this guy comes to Goa. They plan to stay together. There are 4 friends who plan to stay together. सबके लिए love definition is totally different. प्यार की परिभाषा सबके लिए अलग है. Everybody is very detailed. We have worked in the detailing of the character. So everybody is quite different with their own zone. They are sort out हुए हैं. हर एक की अपनी love definition चल रही है. और at the same time, this guy, how his journey of somewhere he's stuck where in the astrology believes to be कि he has to find somebody to get married to get divorced. So
उस जर्नी में उसको लड़कियां मिलती हैं और एक टाइम आता है जिसमें डायलॉग बोलते हैं कि गुच्छा टूट रहा है लड़कियों का गुच्छा. So that happens or it's quite a quirky and very interesting film. I think plotting is very good. So how this idea came up to you and how this project happened? I had gone to meet Sandesh Naik ji, who's our director. उनसे मैं मिलने गया था, कुछ ऑडिशन भी हुआ था एक, और at the same time he seen my previous work जो मैंने हवाबाई फिल्म की थी, उसमें मेरा जो कैरेक्टर था साकिब सलीम के साथ एल्डर ब्रदर का. So he seen all my work at the same time. और तब ये मुझे जो अपील किया था इसके अंदर वो ये था कि the character was very different from what I have portrayed so far in the market. Anushka Sharma के opposite I have been endorsing a brand just from 5 years. Deepak opposite Deepak I have done a Fiyama brand. Nivea I have done with Anushka and a couple of other things. And the TV show which I have done so far have portrayed me as a lover boy, romantic guy who's very heroic thing on screen. But this was a chance to show my range of performance, versatility to the audience. So I wanted people to know that I think this was a good risk as well. At the same time, it was a challenge for me. कि मुझे किसी तरीके से अपने आप को we worked on it. We actually had done 20 days workshop at the same time. उसकी body language, उसका बैठने का तरीका, उसकी गर्दन कैसे नीचे होगी, कितना वो walk करेगा, कितने छोटे steps लेगा. So the whole everything I had to be in the character, try and perform the best I could do. और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया. People have loved the film. People have especially loved the character of JD. I don't know how. मेहनत काम आती है, that's I'm sure कि regardless to it's a new film, it's a new production house, new director, but we tried our best to portray it to a level that people should laugh in the scenes. Laugh not because of, it's a rom-com, it's a romantic comedy, but comedy ऐसी नहीं है जो laughing rights और आप हंसते जा रहे हैं, लेकिन situationally आपको हंसी आएगी और it's a light film, it's a light portion of a journey of JD. इसकी जिंदगी में क्या होता है? शायद सीक्वल में उसके आगे बच्चे भी होंगे, तो we'll get to see that. So Anuj, we have been watching you on television. You have grown as an actor day by day, day by day. So how it has been as the journey of as an actor to you? You see me and I see you. It's been good, I think, क्योंकि मैंने हमेशा से believe किया I should start from scratch. क्योंकि मेरा मानना है, I think I've always believed my father's word. He always mentioned to me that anything you start has to start from scratch. So you don't get to fall on your face if sometimes you think you're not able to make it. So it's important to be very stable when you start working. It takes time, लेकिन वो वक्त के साथ तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. So I think I have tried to do the bottling part. I tried to do my print ads for 3 years in Delhi, and then I moved to Bombay. And in Bombay, I tried starting with commercial ads. एक बहुत ही बढ़िया commercial ad Gillette का आया था. So my growth has gone with time high and high. That's for sure. But though it's slow pace, but I believe slow pace is best. मेरी टीवी जर्नी रही, टीवी टेलीविजन करने के बाद मैंने एक शो किया था, जो टेलीविजन के अंदर आया था, एक इतनी सी खुशी भी शो किया था रिसेंटली, जो बहुत पॉपुलर हुआ था. उससे पहले एक सचिन शो किया था सनाया रानी के साथ, और बीच में मैंने आई गॉन टू डी स्टार्सबर्ग न्यूयॉर्क फॉर मेथड एक्टिंग कोर्स, वो भी मैंने किया था. तो I always believe in learning at the same time. With time, you should keep learning. The growth has to be seen. Film I did, two Punjabi films I've done so far in the last 3 years, and one supporting role I did in a good film, which was Hava Hawai, Amol Gupta की, जो अमोल गुप्ता सर ने बनाई थी. और उसके बाद as a main guy in the Hindi film debut would be this Love Shagam. And even somebody asked me आपको reviews के बारे में, and you like worried about how the reviews are going to be for the film. तो मैंने यही बोला था कि मुझे रिव्यूज का डर नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर व्हाट आई एम डूइंग. इफ इट अपील्स मी, इट विल अपील पीपल एज वेल. So when you see the trailer of JD, Love Shagun, JD is a character who is always confused. It looks like that. So I have a question. Ki when was the time that when you became confused on the peak? I think confused नहीं होता. There are times when मैं ये नहीं कहूँगा JD confused है, वो somewhere confusion नहीं, but जब आप कभी decision लेना चाहें, बहुत ही important decision लाइफ का लेना चाहें, तो कुछ वक्त एक निकलता है जब आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है कि क्या really what is more important for you in life. वो एक जर्नी होती है जो पैच होता है, where you which you can call confusion, or you can call it as कि एक पैच होता है जिसमें आप समझ रहे होते हैं कि क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं है.
आप इवैल्यूएट कर रहे हो उसे। तो आपके लाइफ में वो कौन सा पॉइंट था जब आप सबसे ज्यादा ऐसे कंफ्यूज हुए थे किसी चीज में? पॉइंट ये तब था जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था। मेरे लिए दिल्ली से मुंबई आने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। आई यूज्ड टू कम हियर फॉर अ वीक एंड गो बैक अगेन। आई यूज्ड टू बुक अ फ्लाइट फॉर अ वीक एंड कम बैक उस वक्त, और सब कुछ मैंने खुद ही किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। My parents were not keen that I should go away from दिल्ली से दूर जाऊँ उनके घर से और अकेले कुछ, you know, I wanted, because मेरी खुद की फैमिली बिजनेस है जो फुटवेयर का है, और I'm the only son, I should have taken care of it ideally। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था कि वो छोड़ के कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के दूसरी एक डायरेक्शन में जाऊँ जहाँ मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स को, मैं कुछ ये नहीं बता पा रहा that there is some earning in this field as well. I will be able to make my name and would be able to do it. So it took me about 2 to 3 years to get that name and fame, where my parents started believing me, yes, he can do it. So that patch of 1 or 2 years was very difficult for me to do it. So वो बहुत major confusion थी whether I should go back or whether I should stick to this journey and this struggle and try and create some name. So Anuj, now I have a very serious question for you. Since you know that along with your film, there are 16 more films, or Hindi feature films are releasing on the same day. So how difficult it has become to make a film, then release it and then sustain it on theaters? See, it's easier to make a good film, but जब आप बेचने जाते हैं तो उतना ही मुश्किल होता है। I think it's another task to sell the film. आपने अच्छी फिल्म बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक वो फिल्म लोगों तक पहुंचती नहीं। आज की डेट में लोग, बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है, मेरे पास एक अच्छी फिल्म है जो मैं बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ इट्स अ वेरी गुड फिल्म, लेकिन उतने ही पैसों की जितनी वो फिल्म बनेगी, आई हैव टू स्पेंड अबाउट 4 to 5 crore जस्ट टू प्रूव इट कि ये फिल्म अच्छी है, लोगों तक पहुंचे। प्रमोशंस में मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, शायद होर्डिंग्स लगानी पड़ेगी। तो द टाइम हैज कम वेयर सो मेनी फिल्म्स आर कमिंग नाउ, 52 वीक्स आर देयर इन अ ईयर, और तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 200 फिल्म्स कम आउट, मोर देन 200 to 300 फिल्म्स कम आउट इन अ ईयर, जिसमें इंग्लिश फिल्म्स भी आती हैं। तो नाउ द थिंग्स हैव बिकम लिटिल टफ फॉर द पीपल टू गिव द गुड फिल्म टू पीपल। एज एन ऑडियंस हम भी कहते हैं ना कि हमें अच्छी फिल्म नहीं आ रही इस वीक, अभी अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना रहे। उसका रीजन सिर्फ ये है कि द होल प्रोटोकॉल इज लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू रीच टू पीपल। अगर मैं आज आपको कहता हूँ कि लक्ष्य अच्छी फिल्म है और IMDb पे उसकी 7.5 रेटिंग, तो वो फिल्म देखने के लिए मैं आपको कहता हूँ आप जाइए आप पास के थिएटर में, लेकिन अगर आपके पास के थिएटर में फिल्म नहीं होगी तो आप कहाँ देखेंगे? सो एवरीथिंग गेट्स स्टक, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ स्टक हो जाता है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू मेक द फिल्म रीच टू द पीपल ऑल द प्लेसेस। हाँ, so biggest problem is कि when I want to watch your film, it's not there in my near cinema. तो एक अच्छी फिल्म बनना और एक अच्छी फिल्म पहुंचना या एक फिल्म का लोगों तक पहुंचना में दोनों अलग ही अलग डिफरेंस है आज की डेट में। एक बात था जब अच्छी फिल्म होती थी तो वो ऑटोमेटिकली सब तक पहुंच जाती थी, सबको पता होता था। आज की डेट में आई थिंक फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 ही दिन है जिसमें आप फिल्म का रिव्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ ये फिल्म अब लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन जब तक वो लोगों तक पहुंचती तब तक वो उतर जाती है। So the whole game is between the people, the cinema theater people who are the distributors, exhibitors, जो ये फिल्म लगाते हैं। अगर वो फिल्म आपको शाम के वक्त लगाएंगे तभी आप देख पाएंगे। सुबह 11-12 बजे जाके कोई इतवार को आई एम श्योर को देखने जाएगा, मैं भी नहीं आऊँगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा 12 बजे उठ के किसी लिए फिल्म देखने जाना, चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म कर रहा हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट फिल्म शुड रीच टू पीपल, देयर हैज टू बी प्रोटोकॉल दैट somehow people should write about it. We have a social platform जहाँ पर हम लोग पिक्चर मूवी के बारे में लिख सकते हैं, so that the awareness is there that ये फिल्म अच्छी है। अगर ये फिल्म अच्छी है, उसकी रेटिंग IMDb is one of the places that I'm still repeating that, जहाँ पर मैं भी मूवी देखने से पहले IMDb चेक करता हूँ कि इसकी रेटिंग क्या है, ताकि मैं अपने पैसे खराब ना करूँ। क्योंकि आज की डेट में कोई इंसान 300 से 400 की एक टिकट लेता है, I think more than 1,000 rupees two people spend in one movie देखने के लिए। तो ये जरूरी है कि आप प्रॉपर रेटिंग देख के जाएं, ये फिल्म अच्छी है या नहीं, ये सोच के जाएं, लेकिन आप उसके बारे में लिखें। You should write about the film online, you should write about the film on Facebook, and that's how people would be able to get the film towards you. जब डिस्ट्रीब्यूटर्स उन सबको पता लगेगा कि फिल्म अच्छी है और लोग लिख रहे हैं, जब रेज हो रही है इस बात की सोशल साइट्स पे, ऑटोमेटिकली पिक्चर आपके पास पहुंचेगी। Watch my film Love Shagun, which is coming on 26th of February, and it's a brilliant film. You will love it with fine edge pictures. Keep watching.